morning, students. Uh, in our previous classes, we were studying about the pastoralism in the and agriculture in the Mary kingdoms. Now we have seen that these pastoralists, among these nomadic pastoralists, there were many kinds of the pastoralists. Amongst them, we have seen they belong to Assyrian tribe, pastoralist, and the nomadic tribes, Akkadian, Amorites, and Armenian. These were the four. Now, and these nomadic pastoralists were the great danger for the state. Now, the state was kept always, Mari kingdom or this city or the officials of the cities, bureaucrats of the cities were always put at high alert against the dangers raised by these uh, invaders. We can say that invaders and pastoralists, very dangerous pastoralists, and they were always threat for the cities and towns. हमारी towns के लिए ये हमेशा cities है, and now on amongst these Akkadians we know they were also very influential. Assyrians they had formed in the northeast of the very dominant there, and we know the Amorites. Amorites were very dominant, particularly in the Mari kingdom, because the Mari kings belong to Mari king of the Mari, particularly himself. He belonged to the Amorites clans. Understand? Or Armenians. So among them, examples we have Amorites. The king was belonged, and now they had their own way of the life. They had their own dress, their own culture, quite distinct from the from the local inhabitants, from the original inhabitants, because these Amorites, the king of Mari, they had come there as the invaders and captured the powers, capture and established their rules there, and that is why they formed their own temples, built their own temples for uh, for their own god and goddesses. Amongst that, Dagon, god of steppe, since their life was a economic life, was basically dependent on the steppes, on the grasses of the steppe. So they they were very much inclined towards the worship of worship of the gods. Steppes god Dagon. Dagon was their god of steppes, and their dress in the since in the respect of dress they were quite different from the local inhabitants, the original inhabitants of that, and we have available sources. Nomadic pastors live on the steppe, on the roads dwelling camps. ये बहुत से sources ऐसे हमें lots of sources speak about it there. These nomadics the nomadic pastoralists, they settled or they used to just stand their camps and let their camp alongside of the roads and whether lived in the camps. And now, moreover, some of the scholars and their movement was very frequent, and some of the uh, 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 scholars don't keep them in the categories of the pastoralist. Now they say that no, they had no any cult sense, they had no any sense of assimilation in the state. So they were in any respect, they were and now they never integrated in the state society.
So in respect from viewpoint of that, and moreover, they have always appeared have been on the move. हमेशा देखा जाए कि वो they were on the going on the moving and migrating and moving. That's why they never assimilated with the state system and around the state. They kept on moving and they did not bury their dates. And now why? That is the urban now literary text of the Mesopotamia speaks about that. Disappeared nomadic say now this say perished nomadic people who now knew no cult. इनको ऐसा भी था कि उनको अपने कल्ट के बारे में नहीं, देयर वाज नो एनी बिग सेंस in them, and the kings of Mari or the sources reveals करते हैं या sources speak that always state was kept at, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि हाई अलर्ट पे सिटीज को रखा जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर डेंजर्स, इनके खतरे से वो स्केप्स करने के लिए ऑलवेज। तो और वी हैव many evidences found that there had been a constant, a frequent correspondence between the king and the this king and their officials में हमेशा एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंट क्या है, एक फ्रीक्वेंट इंटरेक्शंस होते हैं। हाई अलर्ट्स, दे केप्ट ऑन द हाई अलर्ट्स, ऑफिशियल्स को रखा जाता था और अगेंस्ट दीज मूवमेंट्स ऑफ दीज ट्राइबल्स, movements of these tribals इनको pastoralist nomadic tribe pastoralists के movements के against में हमेशा state को alert रखा जाता था, and the kingdoms now kept the very strict watch on them, okay, to keep the safe state and keep the safe uh, uh, keep the safe the cities. Moreover, अगर हमारी cities को देखा जाए तो हमारी cities है was the very significant. It was just situated, located on the just main upstreams of the Euphrates, and now it was the main center of the trade station. हम कह सकते हैं कि trade stations था। The goods were brought from Syria, Lebanon, or Turkey, say loaded, just loaded boats, and the loaded boats were used to come. Okay, and here it was the station where the hundreds of boats carrying the loads of the goods now stations there, and then after from there they now were allowed to uh, eh, go the downstreams of Euphrates and downstreams of. So from the uh, trade and commerce के point of view से this cities was very important. ये transactions trade 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 stations हम कह सकते हैं कि जो लेबनान से, सीरिया से, जो और टर्की से जो इफ्रेट्स के थ्रू जो विच द boats were coming here, so it was the very remarkable things and more, और प्राइम पोजीशन ऑफ द ट्रेड, इसका जो सिचुएशन था हमारे का ट्रेड पोजीशंस पर था, और मोस्टली यहाँ देखा जाए कि नाउ प्रॉस्पेरिटी ऑफ दिस सिटी वाज वेरी, एंड इट वाज ए वाया मारी दैट वाया पहले वाया मारी द बोट्स loaded with various kind of the goods like wood, copper, tin, oil, wine loaded, and various other goods were carried in the boat along the Euphrates between the south and upload of the Turkey, Syria, and Lebanon. And these boats carrying grinding, in boats में grinding stones होती थी,
एंड मोर वुड होते थे, वाइन होता था, ऑयल जॉर्स होते थे। मैरी देयर वे टू द सदर्न सिटीज, और वहां से मैरी से फिर आफ्टर दैट southern cities, towards the southern cities, these boats now moved on and uh, just moved on from the Mary. Mary station tha for certain times से these boats were just stopped there and rest की तरह या refuel जैसे होता है या री रेस्ट होता है उस तरह से था ये वाया सीरिया लेबनान से होता हुआ ये वाया था और यहीं से फ्रॉम हियर द जो बोट्स होते थे for the allowed to go downstreams and the other cities, southern cities of the Mesopotamia. So now we can see here that this boats and some of the mention है कि boats having the capacity of carrying the 300 jars of wine jars carrying the hundreds and officers मारी frequently और उस वहाँ की जो state था much used to take the much interest in the trade activities और ऑफिसर्स जो अधिकारी थे ऑफिसर्स थे मारी किंगडम्स के या किंग्स के वो दे यूज्ड टू गो in connection with the trade and commerce in the other states for the negotiation and for the trade purposes. So now we can understand how the king was and the rulers of the Mary was much anxious about it and the trade and commerce because he had the much income and the prosperity and through the trade incomes and the taxes prosperity of a state dependent on that and a state became the more prosperous and moreover that uh, okay timing is that just from here that trade movements was happening और आगे देखा जाए फर्दर तो नाउ दे वुड इंस्पेक्ट द कार्गो ये ऑफिसर्स क्या करते थे कि जो भी कार्गो वहां से आता था कार्गो यू नो वेरी वेल दैट द शिप्स एंड द बोट्स लोडेड विद द गुड्स को हम कार्गो कहते हैं तो दिस कार्गोस वेयर कॉन्स्टेंटली checked and inspected by the authorities and by the officers of the marine and now और हर बोर्ड्स पर 1/10 ऑफ द टैक्स वाज इम्पोज उस पर टोटल जो उसका मेजरमेंट होता था और उसके ये पर 1/10 टैक्स लगाया जाता था एंड द चार्ज अबाउट द 1/10 लेवी चार्ज है कार्गो एंड लेवी चार्ज है एंड वैल्यू ऑफ द गुड्स बिफोर द अलाउइंग बोट कंटिन्यू द डाउन और ये टैक्सेशन टैक्स इम्पोजिशन से पहले वैल्यू ऑफ द गुड्स से जो था उसके असेसमेंट्स के बाद उसकी वैल्यू असेस करने के बाद और पूरी वैल्यू मान लीजिए है मान लीजिए 100 रुपीज़ का टोटल ऐसे वो कार्गो है तो उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ है मान लीजिए तो उसका 1/10 100 रुपीज़ का वो टैक्स के फॉर्म में देना every traders understand so this in this way the trade system continued and prospered moreover barley would come in a special grain boats. Barley also imported, and it was especially. And now further, Mari imported copper. पर्टिकुलरली मैंने पहले भी कहा था कि वह मेसोपोटामियन से जो सिविलाइजेशन इन दैट सिविलाइजेशन द मेटल्स जो है मेटल बहुत लैक करता था इसलिए फॉर दैट रीजन they had to import the metals for the tools and for other purposes. ब्रोंज सिविलाइजेशन में पर्टिकुलरली मेटल से की बहुत उनको जरूरत थी क्योंकि मेटल्स था नहीं क्या मेटल एंड वुड्स बोथ ओनली पाम ये डेट पाम्स होते थे अंडरस्टैंड
और डेट्स होते थे, तो डेट्स में भी जो वुड्स हैं, वुड्स भी नहीं उनका lack the woods, good woods. So that's why they had to import the woods and the metals. Very urgent, they had to be the in the, and moreover imported जो imported में copper था, copper and now and the tin from Alasia एंड द आइलैंड ऑफ साइप्रस, साइप्रस के आइलैंड से, एलिसिया आइलैंड से ये कॉपर एंड टीन वाज इम्पोर्टेंट. वी नो दैट आफ्टर द एलवाइंग द टूल्स, मिक्सिंग अप दोनों के एलवाई करने के बाद वो क्या बनता है, ब्रोंज. इट इज द, वी नो वेरी वेल, ब्रोंज was, since this civilization was bronze civilization, because the use of bronze dominated in this civilization. So on in the name of the bronze civilization, the civilization was named in the use of the bronze. On the basis of use of the bronze, civilization was now termed as the bronze civilization. And here, and moreover, it is the words हम mention कर सकते हैं कि that कि the age, this age was the bronze civilization. That is why the bronze now played a very dominant role in these civilizations. We can say the further we have to see that the urbanization in southern Mesopotamia and temples and things. Okay, now let's see Mesopotamia. मैंने कहा कि Mesopotamia, in the Mesopotamia the temples and the kings played the very important role, particularly temples. Temples played the very important role in the Mesopotamian civilization. Or most of the towns now there emerged around the temples, and temples I have already mentioned how these temples had played the role in the production of the production of agricultural production in adjacent area and the adjacent area of the cities. This temples now temples how the temples now arrange the irrigation system. A lots of information we have got regarding that. Now on the tablet say speaks a lot about the activities of the temple. मैंने पहले भी बहुत मेंशन किया है कि activities ये temple was not only the temple and place for the believers. It was the place of economic activities, social activities, and political activities or cultural activities. It was the place for that. All activities happened there. Understand? And people occasionally used to come here and celebrate. And social associations का भी एक place था, cultural association और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का भी एक मेन सेंटर था ये. और ऐसा माना जाता है कि पूरे सिटीज का, शहर की जो पॉपुलेशन है और इंटायर सिटीज जो पॉपुलेशन होते हैं उनका मैनेजमेंट या फूड और उनके फूड्स की मैनेजमेंट्स उनकी और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ऑल थिंग्स वेर डन बाय द टेम्पल्स एंड फूड और पूरी एक्टिविटीज में एक स्टेट की तरह the temples had the very influence over the city dwellers and over the city lives. Moreover, it is the settlements have been the developed in southern Mesopotamia from 5000 BC से माना जाता है. It is believed that this civilization flourished around the 5000 BC before Christ. Okay, and of these settlements development into the earliest cities or gradually मैंने पहले भी आपको बिगिनिंग में ही पढ़ा है कि मेसोपोटामिया was supposed to be the place civilization where the first cities developed. Understand? और ब्रोंज सिविलाइजेशन में 4 और सिविलाइजेशंस हम इंक्लूड करते हैं, जैसे ऑलरेडी इजिप्ट सिविलाइजेशन which flourished on the banks of Nile rivers. Wango,
चाइना में वांगो सिविलाइजेशन, वहाँ पे वांगो रिवर्स के बैंक पर डेवलप किया, और हमारे इन आवर कंट्री अंडरस्टैंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑन द रिवर बैंक्स ऑफ द डिफरेंट रिवर्स। हम केवल इंडस तो मेन है, इंडस वैली इंडस, लेकिन अगर देखा जाए तो कई एक्सकेवेशन में कई रिवर्स मिले, सबका इम्पोर्टेंस है उसके डेवलपमेंट, सबका कोलैबोरेशन। So that is the another thing. So we have seen that now the fourth civilization, the amongst that this civilization is supposed to be the amongst these four civilization. This Mesopotamian civilization is supposed to be the oldest civilization. The particularly religious now develop a earliest or mainly three kinds of the cities. मानते हैं कि शहर होता है, शहर का तो मैंने पहले भी मेंशन किया कि a town emerges and the growth of the town happens in the three ways: whether trade city, one administrative city, or religious city. Cities, the first बहुत से cities हैं जहाँ के religious temples बने और उसके अराउंड में कई city कई populations वहाँ settle down accordingly requirements of the pilgrimage। और ओके, तो एक और cities जैसे और भी cities हैं, जैसे हम सूरत ले लें। सूरत वहाँ पे क्या है कि मेन सेंटर सिटीज बना, क्यों? बिकॉज ऑफ दैट इट वाज द सेंटर फॉर द एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। पोर्ट सिटी बना particularly the trade and commerce के point of view से। the city which now developed because of the develop as a hub of the trade and commerce, उसे हम commercial cities कहते हैं। that is similarly अगर हम इधर देखें administrative cities, some cities as the kings now made his seat of administration, makes the seat of administration, and where around that the all at cities and people say settle down and cities से culture develop there, तो इसे हम क्या कहेंगे? सीधी से simple way में हम we can say it the administrative cities। तो वहाँ मेसोपोटामिया में in Mesopotamia, three kinds of the cities are found. Religious cities develop around the temples, those developing as a center of state, and imperial cities जिसको हम कहते हैं जहाँ किंग अपना imperial city जो राजा किंग ने अपना seat of administration बनाया, around that तो अगर city का expansion हुआ, people settle down हुए, और that is the developed in the form of the cities, that is the called the imperial cities। Moreover, or religious cities and function as the center of trade and occupied a very significant place in Mesopotamia में जो religious city है, मैंने पहले भी कहा कि religious और temple city played the very important role in the trade, commerce, agriculture and political activities, cultural activities. Okay, all activities now we develop in a particularly Mesopotamian culture. Temples played the very important role in the city's life। Moreover, और hardly any stone was available in southern Misra। एक और बात है, मैंने पहले भी कहा कि स्टोन से वहाँ अवेलेबल बहुत कम है, इसलिए प्रीसियस स्टोन्स एंड देयर ब्रिक से कल्चर है वहाँ, एंड पर्टिकुलरली ऑन बैक्ड ब्रिक्स, क्योंकि अनब्रेक्ड एंड सन ड्राइड ब्रिक्स डोमिनेटेड है वहाँ के कल्चर में। एंड एक्सटेंसिवली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग प्लेसेस, शहर अगर देखा जाए वहाँ का तो अनब्रेक्ड ब्रिक से उसको कंस्ट्रक्ट किया गया हाउसेस को। एंड मोर ओवर इट इज द ब्रिक्स वेयर फॉर्म पुटिंग क्ले मिक्सड विथ स्ट्रॉ एंड वुडन फ्रेम्स। इनिशियली ब्रिक्स वेयर ऑफ द सन ड्राइड एंड नॉट बेकेंड। ये बहुत ड्रॉबैक्स है हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो ब्रिक्स होते थे, दैट वाज द बहुत वेल मेजर्ड करके वहाँ के ब्रिक्स से, जैसे ब्रिक्स इज नाउ just clay after the making the soil watery, and then after the it was the mixed, and then after it clay form होता है, उस clay को हम एक वुडन फ्रेम में इसको पैटर्न करके आफ्टर दैट अगर उससे जो निकलता है फ्रेम से
शेप जो आता है वो ब्रिक्स का फॉर्म ड्राई करते हैं सन में, और आफ्टर दैट इसको बेक करते हैं हाई हीटिंग हीट पर। लेकिन वहाँ ये सिस्टम नहीं माना। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी ब्रिक्स ब्रिक्स मिले, दैट वाज द ब्रिक्स ऑफ द वेरी ब्रिक्स, वेरी हार्ड ब्रिक्स मिले हैं, बहुत गुड क्वालिटीज के ब्रिक्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी रोड्स हैं या बिल्डिंग्स हैं, ये सब ऑल थिंग्स हैं। लेकिन यहाँ पे माना गया टेम्पल्स से एक सिग्निफिकेंट रोल था फॉर्मेटिव फेज सुमेरियन सिविलाइजेशन में, एंड पर्टिकुलरली दे कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। मैंने पहले भी कहा कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में टेम्पल्स प्लेड द वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड ग्रेटली हेल्प द शेप द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो। जो टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज था, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इट वाज कंट्रोल्ड बाय द टेम्पल्स, टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड मोर ओवर, और नाउ सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर था। मैंने कई बार आपको कहा रिपीटेडली कि टेम्पल्स वेयर द रिलीजियस डांस, ड्रामा एंड द स्टोरीज, ये सब वहाँ से रिसाइट होते थे और डिस्प्ले होते थे टेम्पल्स के। इसके साथ साथ टेम्पल से बैंक का भी काम करते थे, एज ए बैंकिंग, बैंक्स लाइक दैट, बैंकिंग ट्रेडर्स को ट्रेडर्स को लोन देना, ओके, और ट्रेडर्स को ट्रेड्स के लिए उसके अच्छी क्वालिटीज के लिए उसको कंट्रोल करना, जिससे हम बिल्ड्स भी कहते हैं। तो दीज ऑल एक्टिविटीज एंड ट्रेडर्स, पूरी ट्रेड एक्टिविटीज ये कंट्रोल करता था। कल्चरल एक्टिविटीज था, किंग्स कभी अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए टेम्पल्स यूज करते थे। किंग से टेम्पल से, क्योंकि टेम्पल प्लेड द वेरी डीप रोल इन द hearts of the people. Very peoples will governed by the temples mentally and heartily. That's why the kings, not by the king's rule and threat, peoples were moved uh, greatly by the temples, had the deep faith. So that's why the kings had a very close association with the temples. Through the temples, through the associated with the temples, the kings wanted having their domination, having their authority. So now we see that here the culture, all activities were now Mesopotamia revolved around the temples. Sumerians people were uh, polytheists. Polytheists. Who were the polytheists? Those who worship more than one deity. जिसे हम polytheist कहते हैं. Who were called the monotheist? Those who worship more than only one god and goddess. केवल एक ही गॉड, जिस अगर जो से कल्ट जो एक ही गॉड्स को बिलीव करता है, एक ही गॉड में, वन गॉड में, उसको मोनोथिस्ट कहते हैं। लेकिन मेसोपोटामियन से सिंस मेटोपोसियन मेटोपोटेशियन ये मेसोपोटामियन से हैड द बिलीव, दे बिलीव्ड इन द डिफरेंट गॉड्स, मल्टी गॉड्स, तो दे कॉल्ड एज द, उन्हें पॉलिथिस्ट कहा जाता। इट इज द एंड मोर ओवर, and here worship more than one, and every village had, the city had its own now tutelary deity. हर cities में अपनी own god and goddess of their own preference. Villages में अपने own god and goddesses. It was not uniformly, one god was not uniformly revered or the worshipped by the all. No, different village, different goddess, different cities, different goddess, god and goddesses was worship. Second thing, these a large number of, most of were representatives of power of nature. तो बहुत gods थे nature. मैंने कहा कि आर्यंस भारत में आए, first of all they invaded on the India, Aryans, and they settled down in the Indus Valley civilization, Indus 7 rivers. वहाँ पे वो सेटल डाउन हुए। आर्यंस के फर्स्टली देयर वाज ये आइडल वर्शिप नहीं था, स्टैचू वर्शिप नहीं था, नथिंग, नो एट ऑल। द आर्यंस नाउ वेयर द मच इन्फ्लुएंस्ड
by the nature. Nature, उन्होंने नेचर को इसीलिए इंद्र, वरुण, रुद्र, रुद्र, अदिति, उषा, these God nature, they now worship this nature. Understand? So nature, well, in nature what? The nature came, appeared in two forms. एक पॉजिटिव फॉर्म्स, डिस्ट्रक्टिव, ये पॉजिटिव, गिविंग ए लॉट्स ऑफ वाटर एंड लाइक हम इंद्र की पूजा करते थे आर्यंस, क्यों? इंद्र रेन गॉड्स, डिफेंड द आर्यंस कम्युनिटी, डिफेंडर माने जाते थे इंद्र. इंद्र was the most revered, Agni was the revered. So these natural gods were Usha, Aditi, Varun, they were. So similarly, we can see that in the Mesopotamian civilization, if you look there, then the powers of the nature, they were represented, their gods represented the nature. जैसे हमारे यहाँ गॉड इंद्र है, इंद्र represents the what? Nature, rain. Understand? So similarly, Usha, Aditi, morning. Understand? Varun, now he was the just a conductor of the whole whole universe. So similarly, the Mesopotamian people associated themselves with the nature. The gods was denoted, their beliefs were denoted with the nature. God's name was given in the name of nature. And first of all, we can see that first Inanna was the goddess of love and war. Goddess of Inanna, goddess of love and war. Second, अगर देखा जाए Ur, I have written Ur, the cities, but it means the moon god. Moon god. Further, where the popular deities of the Sumer. And now Enlil was the most eminent among the gods worshipped by Sumerian. Enlil was the most revered god worshipped by the Sumerians people. वहाँ के जो Sumerians से southern Mesopotamia, वो Enlils को worship करते. And now he was regarded as the master of humanity and as a king of kings. उन्हें humanity का god माना, master of humanity and king of kings. He was supposed to be the supreme governance, god of humanity and the god of supreme governance. Enlil. Further, temples were built up for various god and goddesses. Every temples have the various god and goddesses, and here a big temple known as Ziggurat. Ziggurat एक बहुत ही much रोल था वहाँ के मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. Big temples were called as the Ziggurat कहते थे. It was known as the Ziggurat, big temples, and built for main deity of the city. शहर की around the cities जो chief deities थे, he was the main deities के लिए Ziggurat बनाया जाता था. The temples for the main deities of the cities was called as the Ziggurat, and Ziggurat played the very important role, very broad role in everywhere. And it was here that the official religion ceremony were performed. जो official religious ceremony होता था, kings जो से ceremony वहाँ organize करता था. हमारे देश में भी आप ancient या medieval history पढ़ेंगे तो वहाँ kings were now deeply associated with the southern India में खासकर particularly the temples. वहीं पर temples के पास kings used to make the grand temples. क्यों? To show their authority, their power. Big temples were made by for their name, fame and dominance. जैसे आप temples देखते हैं, विश्वनाथ temples,
Now, one of by looking that, what the feelings, what feeling comes in your heart and mind? Feelings is that, oof, wow, who was that person? Now give this the huge structures, what constructed huge structure and how this became the possible and how much that person was powerful. His dominancy and the personality now reflects in our mind, and we becomes the and that person rules in our mind and heart by the denoting the hugeness of his construction and the buildings. This is the that is why the kings now used to show their authority, their power, their strength, used to make the buildings in commemoration of their achievements. And these were structures now the speaks a lot about the strength and powers of the kings and became a psychological obedience obedience now came came out of these temples and affects their public system. Let's see the deity associated with the big temples was mainly worshipped by the people residing in the city. जो big शहर में जो लोग रहते थे around that, they used to come to the cities and the surroundings in the country surrounding as per adjacent area जो outskirts of the cities थे वहाँ के people from there and the people residing within within the brackets of the cities, they used to come in the temples for the worship. Okay, and the earliest known temples was now a small shrine in the unvacant. वहाँ की जो earliest temple माना जाता है कि shrine था छोटा सा जैसे जिसको गर्भगृह कहते हैं जहाँ की where the god say statue is established. Okay, it was the made of unbacked bricks. Understand? So now we have seen that how these cities and the towns now plays the important now temples play the important role in the towns and cities. So students, uh, let's see we have seen one topic say is to be the we have to see in this chapter. One is the legacy of that. Understand? This is the big topic. Rather than 10 minutes and some uh, minutes will take तो ये हम लोग मेंशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में लिगेसी ऑफ द मेसोपोटामिया टू द वर्ल्ड दुनिया को मेसोपोटामिया ने क्या दिया व्हाट द मेसोपोटामिया नाउ गेव द वर्ल्ड क्या जैसे मैथमेटिक्स के फील्ड में एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में कैलेंडर्स कैलकुलेशंस के फील्ड में and bronze licenses field में trade commerce हर field में we shall see a briefing we shall do in that. One thing is that students you are listening you now एक broad आप copy बना लीजिए registered copy उसमें question answer related मैं I will try my best to by the WhatsApp पे मैं आपको questions banks दूंगा I will provide you. Understand? Or on that basis of question answering from NCRTC. You will do your question answer from NCRT. And the, whatever the you are, but the NCRT should be the most preferred for the study. Understand? और और एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने शेयर किया था सम क्वेश्चंस बाय योर इन द व्हाट्सएप के थ्रू मैंने शेयर किया था कुछ और क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एनसीईआरटी से आप बनाइएगा अंडरस्टैंड और क्वेश्चन आंसर आप करना शुरू करें फर्स्ट चैप्टर से लीजिए इस चैप्टर्स का भी हम क्वेश्चन भेजेंगे फिर फर्स्ट चैप्टर का भी आपको क्वेश्चन बैंक्स की तरह एज ए होमवर्क अंडरस्टैंड और ये आप होमवर्क यू विल डू वेरी वेल एक रजिस्टर्ड कॉपी में इस फर्स्ट चैप्टर उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको बनाइएगा अंडरस्टैंड और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स है तो डिस्कस करने की चीज़ है
उसमें भी कभी कभी हो सकता है ऑब्जेक्टिव्स कुछ ओके, और उसमें आप करिए, डिस्कस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए एवरी ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द एनसीईआरटी वेरी केयरफुली, क्योंकि ईच लाइन इज इम्पोर्टेंट इन द एमसीक्यू। जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो उसमें वो बहुत हर लाइन आपका इम्पोर्टेंट है, हर लाइन, हर वर्ड्स इम्पोर्टेंट है, वर्ड्स का मीनिंग, हर लाइन्स डेट्स, और जो रिसोर्सेस का जो बॉक्स है उसे भी केयरफुली पढ़िए टू इन्हांस के लिए, क्योंकि बिकॉज द क्वेश्चंस आर ऑफ द पैसेज टाइप क्वेश्चन आल्सो, पैसेज की तरह 3 पैसेज आते हैं, 15 मार्क्स का होता है पैसेज रीडिंग के लिए, और दैट पैसेज इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द सोर्सेज पर, अंडरस्टैंड, तो सोर्सेज को आप पढ़ते रहिए, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है उसे करिए, और हम आपको क्वेश्चन एफर्ट्स करेंगे, अंडरस्टैंड, तो आप पे राइट। और फिर फर्दर थोड़ी सी ये है, तो फिर लेटस हम अपने मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे अपनी स्टडी को। और now today the time is about to up, okay, thank you very much for attending the